Hello guys, welcome back to part 5 of Terminator Resistance। और आज हम फिर वही खेलेंगे भाई, टर्मिनेटर रेजिस्टेंस भाई। पार्ट 5 जहाँ छोड़ी थी वहां से स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत भीड़ होगी यार, खेलते हुए बहुत भीड़ होगी। ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज्यादा है और एरिया भी बहुत बड़ा है। और ये जो रोबोट्स है ना, ये मरते भी नहीं है। बहुत बहुत गंदे रोबोट्स हैं यार, आपको क्या मालूम। बहुत गंदे रोबोट्स हैं, बहुत गंदे। अल्लाह हबीबी, अल्लाह हबीब, अल्लाह हबीबी हो जा भाई। आज क्यों लोडिंग ले रहे? देखा था ना फायदे हैं। अभी है वेरी बैड स्टार्ट आई गेस। आप नहीं बैठो, चलो कोई नहीं। बहुत भीड़ हो गई यार, बहुत भीड़ हो गई। चल मैं यार, एक तो ये एरिया दिखा देना कम से कम, किस एरिया से मैंने ज्यादा दूर मिलेगी, बहुत आसानी हो जाएगी। एरियाज में नहीं दिखा रहा है, यहाँ से मैंने जाने की कोशिश की थी, उसका हो गया। यहाँ से जाते हैं। चल यहाँ सच कोई रास्ता ही नहीं है। आगे से जाएंगे कोई ना कोई पंगा जरूर होगा। क्या कहा था? यार एक मिनट, जाना इधर है। आई गेस यहाँ नहीं जा पाएंगे अगर हम उधर जा रहे हैं। यहाँ से जा रहा हूँ। भाई तो सीरियस ही हो गया, बड़ी जल्दी इसने डिटेक्ट किया। ये नहीं है, अरे ये नहीं है, इससे पहले वो आ जाए निकलो। यहाँ से जाना पड़ेगा। दो बंदे हैं, इनसे फाइट कैसे ली जाए? बस इधर ही आ रहा है।
यार इनको मार भी नहीं सकते, क्या क्या करूं करूं क्या यार। इसको भी मारना, फिर उसको इसको भी मारना पड़ेगा। यहाँ कहाँ आ गया भाई? छुप छुपा के जाना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं। तो स्पाइडर वाइडर होना उससे इजीली बंदा जान छुड़ा सकता। याद रखो भाई, कुछ फ्री की चीज नहीं छोड़ते। That sign. That has to be Jennifer's house. अब भाई छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो ये यार। Oh my god, ये भाई इधर आ गया तो मैं इधर गया। भाई निकल जा, क्या चाहता है? निकल जाओ ना यार। यार छोड़ दो यार, प्लीज मुझे छोड़ दो यार, प्लीज छोड़ दो। ऊपर घूम रहा है एक तो। भाई चला जा, क्या चाहता है? कितने रोबोट्स? इसकी तो खैर है, ये मसला है। क्या नाम है इनका? T-800। हाँ, ये जितने T-800 है ना, सब जान। That's Jennifer's father. Poor guy. अरे लुढ़क के आना यार। All full of jokes। अरे भाई सेव ना क्यों करें? एक मिनट पहले चीजें इकट्ठी करते हैं उसके। ये तो ऊपर है, ये भी ये नहीं करते। स्किल बुक मिल गई, क्या बात। सेट हो गया। अच्छा जी, इसमें और क्या? बचाओ फुल ऑफ सरप्राइजेस वाकई। केमिकल्स, ये कोई इम्पोर्टेंट चीज होनी चाहिए। I was about to bring up this topic again, so I decided to leave you this letter. I hope it finds you. I don't think it's safe for you and your brother to stay at home anymore. Something broke inside, and I was scared you might do something to one of you. And we are not the same man we used to be. We are very close.
ये मतलब मैप नहीं खोलता नहीं खोलता पता नहीं भाई। अच्छा किला आ गया भाई। अरे भाई क्या करें हम। लेवल 2 आई गेस कर लेना चाहिए इससे पहले कि कोई मसला होगा। ठीक है हमें जरूरत पड़ रही है। अच्छा जी रोज की वालदा मोहतरमा रिसोर्सेज और तो कोई ट्रेड रिसोर्सेज यार उसको मैं वो नहीं सकता है ऑलरेडी मेरे पास और है मैं नहीं ये दूसरी गन मैं इसकी जगह रख नहीं सकता। एम्प्टी बॉक्स Empty. Now where's the rest? Huh. Is that a map to your hiding place, Patrick? अच्छा और यार आपको भाई कैसे छोड़ देना यार नहीं छोड़ सकता प्लीज ऐसे नहीं करो मुझे जाना पड़ेगा यार वहाँ मैं जाऊंगा यार मैं जरूर जाऊंगा यहाँ से मैं वहाँ जाऊंगा मेन ऑब्जेक्टिव्स को छोड़ के मैं वहाँ जाऊंगा और मैं यार ये कंप्लीट करूंगा मुझे बहुत मजा आएगा। अरे यार इसके ऊपर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हबीबी यू आर डेड आरआईपी रेस्ट इन पीस ब्रदर। अच्छा यार यहाँ कोई और ट्रेडर्स अच्छा जी अब हम जा रहे हैं मौत के मुंह में। ये कुत्ता घूम रहा है। अच्छा एक चीज कर सकते हैं यार ये वाला तो नहीं इधर आ रहा ये वाला जैसे गुजरता है फिर उसके वो एक बिल्डिंग के पीछे वाली साइड से इधर से यहाँ से होते हुए जाएंगे ये एरिया फुल हो इस एरिया में तो आपको भाई ने फुल धनाधन कार्रवाई डाली थी यार ये कहाँ से आ गया हाँ जितना बच के रहो लो
एक में नहीं, दो दो हैं। मनूस। यार ऊपर जाने का रास्ता कहाँ है बे? यार मुझे पहले ही इनसे डर लगता है बहुत ज्यादा। सीधी जो बात है, उन्हें सेक देते हैं ये लोग, छोड़ते तो है नहीं। लोले ने तो यहाँ फुल की हुई। यहाँ पहुंच। यार ये सोच से मैं इकट्ठा करता हूँ। बड़े हरामी हो यार तुम। That's quite an imagination you've got there, Patrick. Okay, that should do it. मेरे से चौक से निकले। अरे कोई नहीं, बहुत मजा आया यार मुझे यहाँ में। वो ये कहाँ से डिटेक्ट कर, नीचे से डिटेक्ट करेगा तो ऊपर नहीं के। एक है हमारा ये, उसके बाद है एक ये। हम ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। अल्लाह करते दुआ दुआ करते हैं कि ये दोनों इसके आगे ना। ये कंजर खाना तो करता है। मतलब मैं शॉर्टकट मार के निकल के कहाँ जाऊँ? और यार आपको पता है यार, अच्छा ये लोग
अच्छा अरे भाई अबे मैंने तो वो वाला रोबोट समझा था यार ये तो हे तेरा तो पीपा फाड़ के रहूंगा चाहे जो मर्जी कर ले T-47 neutralized. Neutralized? You were supposed to take a picture of a functioning unit. We were trying to inspect their AI protocol while they're operating out in the field. तस्वीर ले ली थी यार क्या कर दिया यार मैं सारे मिशन करना चाहता हूँ इसलिए हाँ मुझे काफ़ी हद तक शक था कि हम यहाँ से आएंगे तो हम उसकी पिक्चर ले लेते हैं कोई टेंशन की तो बात ही नहीं है यार ठीक है कहाँ है लौंडा Got it. Sending it right now. Well done, Private. Now proceed with your main objective. तो सफर कर रहे मेन ऑब्जेक्टिव अब इसका तो ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा यार ये क्या हो गया T-47 neutralized. Nice work, Rivers. I'm impressed. यार आज मुझे गुस्सा होता है मैंने देखा सब पे एक बार उतार अरे यार मुझे बहुत मजा आ रहा है यकीन करो मुझे बहुत मजा आ रहा यार ये गलत यार ये बहुत गलत
मेरी वाली तो ठीक है, गलती मारता है यही है यार। उसको फिर से शुरू से मारना, उसको नहीं अबे मारना पड़ेगा। अच्छा भाई ध्यान रख ले। नहीं वो डेड है। इधर है बे। सामने यार बहुत मजा आ रहा है यार, बहुत भीड़ हो रही है। किसने डिटेक्ट किया है? इधर आना तू। किसने डिटेक्ट किया? हो रहा है यार आपका भाई। कौन था? नहीं नहीं वे कौन मार रहा है? नहीं मेरे को मालूम करने का रे। अरे उसको भी देखता हूँ मैं, सबर करो। उसको तो मैं अपना बनाऊंगा हैक करके। आपके भाई को हैकिंग भी तो आती है। पहले सेफ गेम करते हैं, उसके बाद बाकी काम करते हैं। पंगे फिजूल में नहीं ले रहे। हमने ऊपर जाना है। ये जो रिसोर्सेज है ना, ये जरूरी होती है। ये भी नहीं बाद में काम आती है। अच्छा ये ऊपर वाली मशीनें करते थे बस, ठीक है। बाकी खैर है।
यार रिसोर्सेज भी जरूरी ना यार, मैं क्या करूं, मैं भी मजबूर हूँ। यार इसको पहले ठीक करा थे, इसको हैक करा थे। ओ मेरी जान यार, क्या करते हो? और यार आपको क्या मालूम, तो मैं कोई चीज छोड़ दूं, कोई चीज नहीं छोड़नी चाहिए। इसकी इन्वेंटरी में जो भाई 500 गोलियां होगी, इसकी भी नहीं होगी। इसका डैमेज 65 है और यार इसका डैमेज बहुत ज्यादा है। गुड वेपन स्किल इज टू तू भाई तू पागल पागल तू, डैमेज इसका डैमेज ज्यादा है। फिर इसको अगली में भी किसकी है? सारे कानून जो easy come on dude, यार एक ही जगह पे कितनी दफा इनका पावर स्टेशन तो यार हैक करो आराम से अपने बंदे बनाओ।
एक यहाँ से हमने भागना है कुत्तों की तरह। मुझे चीजें लेना। अरे यार आपको क्या बोलूं। Plasma storage destroyed. Good to hear, Rivers. Now proceed with your mission. सबर करें। सिखा ऐसे खेलते हैं गेम। ऐसे ही होता है। हो नहीं सकता है। कोई जरूरी चीज होनी चाहिए। तो डॉक्यूमेंट भी इम्पोर्टेंट है। Dispensary. This is it. मैं भी नहीं कहीं जाते भाई। हर चीज की Looks like Colin was really prepared. Or maybe he was planning to open his own pharmacy once this was all over. Huh. Aaron will appreciate that. वह क्या करें यार आपको क्या बोलूं। ओए ये क्या स्काइनेट की इधर जाना ये क्या एक दोनों ऑब्जेक्ट बहुत अच्छे ये स्काईनेट गेट तो ये रहा ना डिस्ट्रॉय कर दिया मैंने। अच्छा अब कुछ भी नहीं है बे बेवकूफ बना रहे हैं। इधर आ तू इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ मजाक में सीरियस हो गया है।
यार मेरी जान, थैंक यू। ये उस वक्त कंप्लीट ही नहीं हुआ था यार, क्या करते हो? अच्छा मैं भी पता नहीं क्या मसला हुआ, क्या तो दी नहीं मैंने सारी तस्वीरें। तू भाई ऐसे कर ले, तू सस्पेंड कर ले, और ऊपर है। सब तो ऑल गुड कह रहे थे। हाँ मैं तस्वीर लेने को बोल रहा हूँ। Second batch going through. Got it. One more to go. ये गोलियों से नहीं मरता, हाइट से मर जाता। अजीब आदमी रोबोट गोली मार रही कुछ नहीं हुआ। हाइट मैं मर जाऊंगा यार, मैं मर जाऊंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं भी कभी रहूंगा। ओ नहीं कुछ हुआ है, बच गए तुम कुत्ते। भाई मुझे मिलते हैं एक्सपी, सीधा बताऊं, ठीक है? तो मुझे बोलेगा ना क्यों फोड़े, मैं उसको फोड़ दूंगा। अच्छा मैं अपने पूरी चीज को आगे भाई ने सारे रोबोट्स माँ बहन कर दिए जब से कॉन्फिडेंस था। वो ठीक है भाई, क्यों महंगे? अच्छा ऊपर से, अब ऊपर कहाँ से जाऊंगा? अच्छा जगह बनाई है उसने ज्यादा जो तुम दोनों को मामा। That's the last one. Good job with these pictures, Rivers. We're one step closer to preparing a counterattack. I'm starting to see why Skynet isn't so... fond of you. Now get your ass back to the shelter. ठीक है ठीक है भगवान, यहाँ से तो जितने ही नजदीक है। सर ये फजूल की उंगल नहीं करनी चाहिए।
वो फोर्स भाई जान सबसे मुश्किल और लंबा और बहुत बड़ा है यार, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आए चिन्ह हो बिठे जो बैक टू हाइडआउट आ गया जाके सबसे बड़ा। अरे अब तो मैं कर सकता हूँ। यार ये क्या परफॉर्मेंस, क्या है ये? I know I promised to stay awake, but I'm getting tired. Wake me up when you get back from the hospital. I'm just gonna close my eyes for a moment. See you later. अब ये क्या आपको भाई उठ जा, वापस आ गए भाई, उठ जाओ। नहीं उठ रहे, आई थिंक उनको सोने के लिए अच्छा। लाश पड़ी हुई है, यहाँ कोई भी ना जाए। कंजर चक्रों में बड़ा सलील हूँ। Jacob, how is Pasadena? You know what? Forget I asked. I don't want to know. I'm just glad that you're all right. And how are you doing? I guess I'm a little nervous before tomorrow. Have you decided what you're going to do? यार ये बहुत तकलीफ है, ये बहुत पीड़ा है। Story सुनते हैं। Aren't you curious about what happened in Pasadena? No. I think I'd rather keep that place in the past. Actually, I have a confession to make. I've never been outside of Pasadena until now. Can you believe that? That's not surprising. After all, that's where your home is. Where it used to be. Right now, I'm going to try someplace new to call home. I did my traveling through pictures and postcards that wanderers brought with them. My favorite had a little flamingo drinking water from a lake on it. Its long red neck curved like a snake. Patrick's mother gave me that postcard. It's funny how I never met my mother, but I was around to see Patrick's leave him. I thought Patrick was your brother. In our house, we were all brothers and sisters. But me and Patrick, we've always had this special bond. Felt what the other one was feeling. We'd even get sick together. I remember the day Patrick's mom brought him in. They were both tired and dirty, so we took care of them. Patrick was crying a lot. He was teething at the time. I think that was what scared her away. She just couldn't handle the crying. I guess I'd be scared too. Would you? You seem so composed. I even started wondering if you were a machine yourself. After she took off, I was devastated. But my father said, "You need to grow up. You have a brother now." So I burned the postcard. The little red flamingo flew up in flames. And I promised myself I'd never be weak again. But I guess we all need someone we can be weak with sometimes, don't we? I never asked you. What are you planning to do tomorrow? I've been meaning to tell you earlier, but I panicked.
And that's because I decided to go with Ryan. We'll find somewhere safe, away from all this. You have to understand, I need to do what's best for Patrick. I'm his big sis. I need to protect him. I haven't told him yet. He'll be devastated leaving you and Aaron, but I think it's for the best. यार प्लीज मुझे नहीं छोड़ो यार मुझे नहीं छोड़ो ना यार रेस्ट करते हैं यार छोड़ रोला लगा भाई आगे की Wake up! We need to move. जब सोए हुए थे What's going on? Everyone, wake up! You need to get out of here. Who the fuck are... मेरे पापा हो गए आई थिंक मैंने स्लो किया था लेकिन पापा जब के आ गए 12:30 रात के 12:30 में पापा आ गए सो के मैंने ज़्यादा जोर से कर दिया नहीं बे Are you? It doesn't matter. What matters is that you can't stay here any longer. She asks a question, and I suggest answering. You don't want to do that. I've got this place rigged with explosives, and there's a detonator in my pocket. You got what? Do you mind? Lower your gun, Ryan. He's the one that saved my life. What do you want from us? You have to get out of here. Skynet's on its way. They finally found you. What you mean they found us? They were looking for us? Not for you. For him. He's essential to winning this war. Skynet knows that. That's why they've been following him for months. I have to make sure nothing happens to him. In a couple of minutes, an infiltrator will walk in here trying to kill him. I can't let that happen. We have to bury that Terminator here once and for all. All right, everybody, you heard him. Let's get moving. I'll get the bus ready. There's no time for that. There's a passage here. It will lead you out. Use it. What was that? All right, everyone, get out! Jacob! Give me that. It's the same one. It's the same model. Leave! Now! How the hell's he still alive? Go! Watch out! Don't just stand there! Run! मुझे रिमाइंडर रखने की ताकि मुझे पता मिले मैं कितनी ऊंची बोल रहा हूँ तो ज़्यादा ऊंची पता बोल दिया था अयो भाई तुम सुबह हो गई उससे भी ज़्यादा क्या भाई Baron listened to us. She could no longer deny that this infiltrator was a real threat. She decided to take everyone in, on her terms. The shelter was on high alert, but thanks to the intel I gathered in Pasadena, we slowed the advance of the Annihilation Line and gained some time. Just enough to start preparing the counterattack. एटलीस्ट हम सारे साथ हैं मुझे थोड़ा दुख था कि अलग अलग हो रहे हैं that's some kind of जितना ये भी लग रहा है अपनी जवान है फिर स्किल आई है एक स्किल आई है what do we survive
Crafting crafting. Sergeant? At ease. Well, look at you, Sergeant. When you helped us in Pasadena the other day, I was trying really hard not to panic because you were only a private. Sorry for underestimating you. I guess I should salute or something? How's Patrick? Every day a little better. Aaron says he'll be back on his feet in no time. She's done a great job with him. I wish I could repay her somehow. It just doesn't seem that she needs anything. Getting ready for another scavenging run? No, I just came out here to catch my breath. Baron is giving us the entire evening off, believe it or not. Doesn't sound like her. I need to report to Baron. Rivers, DN 46890. The commander is expecting you in the control room, Sergeant. Maraschino cherries. I don't get it. How did they bring that buggy down here? बातें करते I'm जाओ going out soon. I haven't made my daily quota yet. I still have 3 more rats to catch. If you see one, let me know, okay? और Hey, I'm just catching up with Mark. I'll get back to work in a couple of minutes. You won't tell, right? But no, seriously, you won't tell, right? ये Hey, Ryan, how's everything? Exactly as you would imagine. Baron's keeping me busy. They weren't kidding when they said she's a hard ass. What happened after you started your camp? Honestly, not that much. At least not in the beginning. When we gave up on the idea of getting in touch with anyone, we just tried to adapt. The temperatures fell, we had to scavenge for food. All of a sudden, that became our life. didn't you try to reach home? When did you first hear about Skynet? Oh, that came years later. We did hear some rumors about robot warriors, but you must understand how crazy it sounded back then. And that wasn't even the most insane story out there. My favorite one was about the radioactive squirrel zombies. Well, I know how stupid it sounds, but we managed to have fun in our little commune. I still had my guitar with me. We talked a lot about how we're going to be famous, because we're the only living band in the world. You played in a band. I did. One of the few things I was better at than Tucker. He didn't have much talent, but he loved the idea of sex, drugs, and rock and roll, especially the first two. We were just stupid kids, not realizing what was going on. We paid the price for it the first time we saw a tin can. I was tuning my guitar when I heard a strange noise. I found out later that it was a T-400. Must have heard me play. It didn't even have the decency to look scary. Maybe if it did, we wouldn't have just stood there when it started firing. What did you do? I froze. I didn't run to help. I didn't scream. I didn't even move. I just stood there like a coward. The tin can got Tucker with a single bullet. Bam, just like that. 7 other people died before we finally destroyed that thing. Ironically enough, I was the one who delivered the final blow. Safe to say, it was the beginning of a new era. What did you hear?
A lot of rumors going around of how she's sending insubordinate workers to the front line. And by insubordinate, I mean people who ain't willing to work 18 hours a day, every day. जीजा Do you need anything? Can I see your hardware? यार ले रहा हूँ अरे भैया कितने की चूतोस यार बैकपैक वो बैकपैक यार क्लिप बड़ा चाहिए फ्री और डब्बा चाहिए इमेज क्लिप बहुत ज्यादा कर रहा हूँ बहुत ज्यादा डाल जा रहा है हाँ जी कुछ नहीं भाई यहाँ तो बंदे ही बंदे हैं आपको भी अपनी स्टोरी सुनाई Are you all right? Me? Honey, I'm about the most well-adjusted person in this goddamn place. It's the others you should be concerned about. चलो भाई पूछ ही जाओ You mean Ryan? Ryan ain't so hot either, but that's another story. yes Jennifer? I'm worried about her. I'm the one that asked Baron to give her team a little break. Jennifer's been busy scavenging supplies for the soldiers, and she hardly had time to see Patrick. And now she's finally got a day off. She's avoiding him like the plague. How's Patrick doing? He's fine, but it wouldn't kill you if you checked on him yourself. Is there anything you need? No. I have to say the Resistance is pretty well supplied. Don't tell me you miss running errands for me. I don't believe that for a second. And what about something other than medicine? Honey, I'm not shy. I'll let you know if I need anything, okay? But thank you for asking. Take care. हाँ जी वो पैट्रिक इधर आओ How are you doing? Good. Erin's going to let me leave in a couple of days. Thanks for bringing that chalk. I've been drawing a lot. I'd be so bored without it. How do you like living in the shelter? There's a lot of people here. I like that. I heard a funny joke yesterday. You want to hear it? सुना दे ऐसी Yeah, tell me. What's brown and sticky? A stick. यार I don't get it. Yeah, me neither. How's Jennifer? She's out a lot, but I understand. She's a scavenger. I have to go. अच्छा बाजी Alvin lost his spider scout again. Man, I saw it crawling through the shelter earlier. It almost gave me a heart attack. Mondo plan was a place to the mission report from President. You are probably aware of this, but it is all the folks in your area and the all the three.
जी बैरन बाजी. You wanted to see me? You're finally here. Good. I have a special task for you. I want you to head downtown to check on the doctor. Doctor? Alvin. He's out there making sure that our defense systems are working properly. Ever since we went radio silent, I had a small team of trustworthy messengers maintaining communication between our outposts. They haven't returned, so I want you to go downtown and see why that happened. Could be nothing. Okay. But Connor doesn't want any hiccups while he's up there in North Division preparing the attack on Skynet's central core. हाँ स्टोरी सुनेंगे. If you don't mind me asking, how did you end up here? Excuse me if I act a little surprised, Sergeant. But no one in here thinks it's wise to ask their superior personal questions. But since you did, I'll humor you. So, how did I get here? The same way you did. I was born, raised, and given a gun. We don't really have a say in what we do we? Or do I assume too much? Was it any different for you? Why do you fight, Sergeant? No, I don't understand. It's the right thing to do. There's nothing noble in what we do. Humans were fighting humans since the beginning of time. It just so happens that right now we have a common enemy. If it wasn't for the machines, we'd probably be fighting each other. ये बहुत है. So, I guess we should thank the machines for teaching us compassion. I guess we should. I have my special way of thanking them. A shot to the skull from a plasma rifle. Besides, I'm not a fighter. When I go out there in the middle of the night with my Westinghouse, I'm not looking for a fight. I look to seek and conquer. I'm not a fighter. I'm a bully. What's the difference? I don't treat them as equals. And although I know they're just machines, I want them to fear me. No one ever stands up to bullies. But I have to admit, it has its downsides. One of them being that no one ever asks me a personal question. At least not since Perry died. So congratulations, Rivers. Takes guts to stand up to a bully. I guess since your promotion, you got a little more cocky. Good for you. Is there a problem with the radio? The Annihilation Line is within spitting distance of downtown. Okay. We suspect that Skynet will be intercepting all transmissions from that location. So for now, we're going radio silent. That's why I need you to go there personally. चले जाएंगे यार. Central core? छोड़ दो, आप करते हैं. Skynet's main reactor, the source of all their power. We shut down the central core, we shut down Skynet. Connor's preparing the attack as we speak. So you understand we can't have any critical complications at this stage. बस अपने जवानों पे गिरी मार. Okay, boys and girls, जो भी देख रहे हैं, that's it for this episode. I think it's more. ये एपिसोड इतना ही. मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में. होप करता हूँ आपको पसंद आया हो. गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग जा रही है. इस एपिसोड को एंड करके दूसरा एपिसोड भी अभी शुरू करने लगा हूँ क्योंकि मेरे से नहीं रहा जा. सीरियस सच्ची बात है. So
See you in next episode. Boring. Okay. 何？お前はもう死んでいる。कैसा दिया आपको? है? नहीं दिया अच्छा? नहीं